and off late, it has become quite easy for me to be correlating that why this Eurodollar system crash is important for us to understand, because with the recent crisis of Silicon Valley Bank, which is finding its news across globe. And similarly, last year we had the Credit Suisse fiasco. Then last year we had Deutsche Bank fiasco. And we all could recall the Lehman crisis, etc. These all crises are in a way linked with Euro-dollar system. And that Euro-dollar system is crashing. So that means in order to make you all understand or familiar as to, we need to understand what is Euro-dollar system. In order to go beyond the system of Euro-dollars, I'll have to build up a story as to how this so-called Euro-dollar system evolved. So that means before we can go on to conclude कि Euro-dollar system crash कर रहा है, उससे पहले समझना जरूरी है crash क्या कर रहा है, यानी कि Euro-dollar system होता क्या है. और Euro-dollar system समझने से पहले हमें ये समझना पड़ेगा that how the circumstances of the world gave the birth of a baby called as Euro-dollar system. We all will have to understand this. Why? I'm just repeating these words and then I'll kickstart with the session. This Euro-dollar system, which is in a way crashing, is also leading to crash in the financial security system of the world. Say, for example, last 2 days, the Silicon Valley Bank has been making Indian equity markets and global equity markets also in red. But of course, it is not about only equities. It is also impacting the bond market also. If Silicon Valley Bank is impacting the world's equities and world's bonds, our money, which has been parked with mutual funds, सही है, क्या पता वो भी गलत हो जाए. यानी कि ये सारी चीजें that would impact our personal portfolios as well. This financial security system, which is crashing, collapsing, becoming volatile because of the Euro-dollar system crashing, it will also impact the businesses of the world. If it would impact the businesses of the world, in a way, it will also impact the economies of the world. That means it is all interlinked. And hence, we need to understand Euro-dollar system. And then we'll go on to the territory of how we can see this Euro-dollar system to be crashing. These big changes do not happen in a day. They do not happen in a week. They do not happen in a month. I have been saying this, that this will happen since last 4 years. And by chance, if you Google me out, as Varunji was also mentioning, so maybe Google me out or go over to YouTube or even to Twitter. I've been saying these terminologies, and slowly and steadily we are progressing into that world. So first of all, let's understand the story behind Euro-dollar system. Then we will define what is Euro-dollar system. And then we will move, how is this Euro-dollar system crashing? So story behind Euro-dollar system, from 1880s till 1915, that means 35 years of a span, most of the countries in the world, whether it was UK, France, Switzerland, Australia, Austria, any country in the world, what they did was they said that our currency is backed by gold. We call this as gold backing system or gold reserve system. That means if I have got euros, my euro is backed by gold. If I have got pounds, my pound is backed by gold. If I have got dollars, my dollar is backed by gold. That means, in a way, in this gold standard system, which was followed during 1880s till 1950s by almost all the economies of the world, all the powerful economies of the world, in a way, it meant that whatever amount of gold reserves you have, that much amount of currency can be printed by that economy's central bank. That is gold reserve system. That means gold reserve system means whatever gold reserves you have, you can print as much currency as equivalent to the value of the gold reserves which that economy has. So the government has a gold reserves and the central bank of that economy will be able to print and circulate the currency. So that means printing of currency and keeping them in circulation
will be equal to whatever gold you have. And why would you do so? So that economies are stable. Because every economy wants to increase their GDP. That means the gross domestic product. And every economy wishes to tame the inflation. That means every economy wants that my GDP growth should be more than the inflation growth, so that there is real GDP growth. That means there is a GDP growth in a real sense. And in order to achieve it, all these central banks and the central governments together, they thought of following gold reserve system. And during 1880 till 1915, this was being followed by most of the countries of the world. Just a background before 1880s, many years back, maybe I'll put it this way, 2,500 years back as well, 2,500 years back as well, gold was regarded as a currency. Gold was regarded as a means to barter. And slowly and steadily, that gold was transformed into a gold coin. And that gold coin was equal to the worth of the gold in that coin. और धीरे धीरे करके क्या हुआ, पहले शुरुआत में गोल्ड कॉइन की जो वैल्यू है वो गोल्ड उसके अंदर कितना डला हुआ है उसके हिसाब से, मगर धीरे धीरे करके सिंस गोल्ड की शॉर्टेज हो गई और कॉइन्स ज्यादा चाहिए थे, तो कॉइन का साइज उतना ही रखा, मगर गोल्ड का जो इंटेक था वो कम कर दिया. मगर धीरे धीरे करके गोल्ड के बजाय सिल्वर को भी ले आए. एंड धीरे धीरे करके करेंसीज शुरू हो गई. यानी करेंसी वो कैसे शुरू हुई? बिकॉज बिफोर 1750s कई goldsmith, a lot many goldsmiths in across different countries of the world, whether it was France, whether it was UK, whether it was Japan, whether it was China, etc. Goldsmiths used to say, you give me gold, I will give you a IOU slip. That means I give you a slip, IOU. So your gold is with me, lying with me, and I am giving you IOU slip. And whenever you bring this IOU slip back to me, I'll give you your gold back, and plus the interest also on that gold. This mechanism, the central banks thought, wow, this is what we can also follow. So let's also tell to the common public, you give me gold and I'm going to give you a printed currency, and that currency is a piece of paper, but that piece of paper is backed by gold. And that's what we called as gold standard. I hope the things are clear, pretty clear till now. Yeah. Now, during World War started after 1911. The World War started. The World War का माहौल शुरू हो गया. जैसे आजकल रशिया यूक्रेन का माहौल शुरू हो गया है, तो World War 3 का माहौल शुरू हो गया. पिक्चर अभी शुरू हुई है. तो ऐसे 1910s में पिक्चर शुरू हो गई. Before the first World War to kickstart. And during this World War challenges, all the countries entered into the World War fiasco except US. Now, US is a smart chap. He knows what to do, when to do, and how to do. And during when these all countries were idly involved in war, he was staying out of the war. What was he doing? He was trying to manufacture those stuff which was required by the world. That means by the world wanting to fight, wanted weapons, wanted technology, wanted capital equipment, even wanted some food as well to eat. All this was being manufactured by US back at home, while whole of the world was spending their money into procuring the equipments, wheat, rice, defense equipment, technology. And that means they were all busy buying from US, and US was busy taking gold from them. That means US was supplying goods and the world was supplying gold to US. So this started ever since 1910s. And when it got started, US was accumulating gold. Now comes a story. When US was accumulating gold and the rest of the countries are selling gold, the rest of the countries should reduce the currency in circulation also, because their gold reserves have fallen by. But they did not reduce, they could not reduce the currency in circulation because of the war fiasco. While they did not have enough gold, that was leading to the currency devaluation. The currency's value was falling and the inflation was rising in those economies. But in US was accumulating gold. So physically gold was getting transported from the rest of the world into US.
And if the story is becoming interesting, I would request few of you to maybe switch on your videos. There is no harm in switching on your videos. The story will become more interesting because that will bring more passion out of me to tell you the story background and the background music as well. Yeah. Now, when the world was supplying gold to US and US was getting more gold, US was not printing more currency. Oh, the rest of the world had already printed currency, यानी कि बाकी देशों ने ऑलरेडी करेंसी प्रिंट करी थी जितना उनका गोल्ड था, मगर अब वो गोल्ड बेच रहे थे और यूएस से गुड्स खरीद रहे थे, मगर वो अपनी करेंसी की सर्कुलेशन कम नहीं कर रहे थे और उनकी इन्फ्लेशन बढ़ रही थी, उनकी करेंसी की वैल्यू गिर रही थी, उनकी इकोनॉमी में डॉलड्रम्स आ रहे थे। और यहां पे यूएस क्या कर रहा था? यूएस उनसे गोल्ड ले रहा था, बट यूएस वाज नॉट printing currency equivalent to that gold. That was leading to price fall. That means while the price rise was happening in the rest of the world, in US, the price was falling. Since the prices were falling, that means less of liquidity in US, people were not demanding. Economists say कि यूएस ऐसा क्यों कर रहा था, तो वो कहते हैं यूएस ऐसा इसलिए कर रहा था ताकि जो गुड्स मैन्युफैक्चर हो रहे हैं वो विद इन यूएस उसको ना खपत करी जाए. दे शुड नॉट बी कंज्यूम्ड विद इन यूएस. मोस्ट ऑफ दीज गुड्स शुड बी एक्सपोर्टेड आउटसाइड यूएस एंड देयर शुड बी लेस डिमांड विद इन यूएस सो दैट पीपल डिमांड लेस व्हीट, लेस राइस, लेस इंडस्ट्रियल गुड्स, लेस कैपिटल इक्विपमेंट. डिफेंस का तो सामान नहीं चाहिए होगा, मगर बाकी सामान भी ये खरीदे ना, बाकी सामान भी वर्ल्ड को एक्सपोर्ट यूएस ही करे. सो यहां पे अगर ये खरीदेंगे नहीं तो जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन है, जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन की जो इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है, उसकी जो यूटिलाइजेशन है, उसमें जो गुड्स मैन्युफैक्चर हो रहे हैं, वो अगर यूएस में कंज्यूम नहीं होंगे तो बाहर एक्सपोर्ट हो पाएंगे. और यूएस यही तो करना चाहता था, ताकि एक्सपोर्ट होगा तो क्या आएगा? गोल्ड आएगा. इनफैक्ट few of the central bank governors had warned US that if you try to continue doing this, it will lead to depression in US. US knew that 1933 depression will come, but it still continued the same because US wanted that depression to come, because US knew that my depression will lead to rest of the world also in depression. And by that time, I'll be able to accumulate as much gold as I want from the rest of the world. I hope things are clear till here. Now, by 1945, after the Second World War was over and out, US invited all the superpowers of the world, including the USSR, the UK, the France, the Italies, the Germanys, the Japans, etc., and brought them on the table. In 1945, in a place called Bretton Woods, when US had invited all these economies together, sitting on that table in Hampshire, in Bretton Woods, US announced, US ने सिंपल भाषा में क्या बोला? तुम्हारे पल्ले तो कुछ है नहीं, तुम्हारा गोल्ड तो मेरे पास है, और गोल्ड बैकिंग ही तो करके तुम चल रहे थे. अब समझो कि गोल्ड मेरे पास है, गोल्ड की एक फोटोस्टेट कॉपी है ये प्रिंटेड डॉलर का नोट. तो आगे से आपकी जो करेंसी है, जो लिंक्ड विद गोल्ड थी, अब वो लिंक्ड विद डॉलर है, मगर डॉलर इज जस्ट अ रिफ्लेक्शन, इट्स जस्ट अ फोटोस्टेट कॉपी ऑफ द फिजिकल गोल्ड, एंड दैट फिजिकल गोल्ड इज लाइंग विद मी. यानी कि इन अ वे गोल्ड और आपकी करेंसी के बीच में मेरी करेंसी आ गई, और जो मेरी करेंसी है नाउ दैट इज बैक्ड बाय गोल्ड, एंड आपकी करेंसी के बीच में गोल्ड जो था वो गोल्ड अब नहीं रहा, गोल्ड तो मेरे पास आ गया. सो नाउ इन योर इंटरेस्ट, इफ यू हैव यूरोज, योर यूरो इज बीन नाउ लिंक्ड विद डॉलर. इफ यू हैव पाउंड्स, your pound is linked with dollar. If you have yens, your yens is linked with dollar, because you all nations do not have gold now. That means
In 1945, no choice, but all these economies were under heavy debt burden from US, and plus their currencies were getting devalued, and they were having heavy inflation within their economies, and hence they agreed. What they agreed was the language is called as pegging, Pegging, pegging. That means they fixed their currency, they linked their currency with dollar. And US assured them. Now comes the second part of the game after 1945. In 1945, US assured them, don't worry at all. जितना गोल्ड मेरे पास है, उसी गोल्ड के लिंक्ड I will supply dollars in the world. I will take care of the world. I am the big daddy of the world. So don't you worry. Just imagine कि आपके घर का जो सेंट्रल बैंक था, जो गोल्ड के इक्विवेलेंट करेंसी छाप रहा था, अब तुम्हारे सेंट्रल बैंक का कोई काम नहीं है, तुम घर जाके सो जाओ। वर्ल्ड को एक कंट्री मान लेते हैं और वर्ल्ड का जो सेंट्रल बैंक है वो फेडरल ओपन मार्केट्स कमिटी, दैट मींस यूएस का सेंट्रल बैंक इज द वर्ल्ड सेंट्रल बैंक। एंड जितनी करेंसी छापनी होगी, जितना गोल्ड के बैकिंग पे, वो मैं डिसाइड करूंगा। अब आप सिर्फ तमाशा देखो, घर जाके सो जाओ, मैं तुम्हें सारों को पाल पोस के बड़ा करूंगा। ये समझ आता है? आई होपफुली अज्यूम, आई एम अज्यूमिंग कि समझ आ रहा होगा। मैं देख भी लेता हूँ, हाँ कुछ कुछ तो स्माइलिंग फेसेस हैं, नॉडिंग है, मगर बाकी लोग अभी तक आए ही नहीं है, वीडियो ऑन करके बैठे ही नहीं है, शायद तैयार नहीं हुए होंगे, ऐसा हो सकता है। सो मे बी इन द नेक्स्ट 5-10 मिनट शायद वो अब तक तैयार हो जाएंगे, थोड़ा कोम कुम कर लेंगे, थोड़ा मुंह हाथ धो लेंगे, एंड दे कैन मे बी स्विच ऑन देयर वीडियोस एज वेल, दैट विल बी हेल्पफुल। नाउ when US was able to do this, US had different plans. US wanted to become that big daddy. So US never printed money equivalent to the gold it had. It was interested to print more. Why? Because US wanted more money to launch NASA. US wanted more money to fight war in Vietnam. US wanted more money to create chaos and fiasco in the world. Because US wanted to behave like a big daddy, so US was ending up printing more currency than the gold it had. And slowly and steadily, from 1945 till 1970s, in a span of 25 years, Japan was able to sense it. Germany was able to sense it, that US is printing more currency than the gold it has. So when Japan was doing its industrialization, or when Germany was passing through that industrialization journey, and when they had extra dollars, one fine day, starting from 1958 till 1970s, these economies started going back to US, saying that तुम्हारे डॉलर तुम्हें मुबारक, हमारा गोल्ड वापस दो। That means reversal. Till 1958, they were in shortage of dollar. They were in requirement of dollar. But slowly and steadily, when Japan was able to exceed its exports over the imports, and Germany was able to also become a manufacturing hub of the European zone, both these economies, they went back to the US doors and they knocked their doors, and US को बोला, hello boss, ये डॉलर अपने पास पकड़ो, हमारा गोल्ड वापस दो। And US had to supply gold back to these economies for almost 12 years. But soon US realized that slowly and steadily my power will be shadowed. And hence in 1970s, the president of US, Mr. Nixon, he announced, just like Modi Sahab announced on November 8, 2016, he announced to the world that from today onwards, whosoever has got dollars, we will not be supplying gold against dollars. Chapter closed. The gold lies with me and the dollar lies with you. And if you have extra dollars, you can invest in my US bonds. You can invest in my US paper. Bond means paper. Because US needs money. So US needs money. So I will print money. And against that printing of money,
I will issue a paper. That paper is called as US securities, or we'll call it as treasury securities, or we'll call it as US treasury bonds. And this piece of paper you will buy. Why would you buy? Because you have got no choice. Who is the superpower of the world? US. So if the world crashes, who is saved till the last? US. So if the world crashes and you have got extra money to park, where do you invest? It's as simple as that. If in India, if you believe that one fine day, God forbid, something bad happens to the Indian economy, where would your money be parked? Your money will be parked. The worst scenario would be the government security of India, or maybe a bank's FD, a State Bank of India's FD rather. And that too is only hedged. That is also protected against a few amount, correct? 5 lakh rupees. However, similarly, US also staged this fear that if the world crashes, where would you go? You'll come back to the big daddy, because big daddy is the one who's managing the whole stuff. So that means nothing doing, no gold. Gold is with me, lying in my locker. You have got extra dollars, you buy my treasuries. And that's how US was able to print as much currency after 1970s openly. It announced openly that I'll be able to print as much currency as I want, and rather you will be financing my currency. This is known as Bretton Woods Part 2. That was Bretton Woods Part 1. This we call it as Bretton Woods Part 2. Now, this unlimited money printing is also called as fiat currency. I have given a couple of video extracts as well over YouTube. Maybe if you find interesting, you can go into detail over YouTube. Aman Chugh, CAAMANCHUGH over YouTube, or even on Twitter as well. You will find more stuff on that. I'm not getting into the fiat currency module. But now, what US was able to ensure during all these years till 1970, that now I need not give the gold back. Wow. So if I'm not going to give the gold back, and if anyone has to invest money, he'll come back to me to buy my US treasuries. That means, in a way, in the world, whenever any business or any economy has to flourish, they need dollars, and they will have to borrow dollars from me. That we call it as Eurodollar system. So finally, what is Eurodollar system? जिसको हमने क्रैश करना है, उससे पहले मुलाकात तो कर ले कि भाई यूरोडॉलर सिस्टम है क्या, जिसका क्रैशिंग की हम बात कर रहे हैं. टॉपिक ऑफ द डे, यूरोडॉलर सिस्टम क्रैशिंग. तो कईयों को लगता है यूरो और डॉलर क्रैश कर रहे हैं, और नहीं, यूरो की तो कहानी नहीं है. यूरो डॉलर का मतलब है डॉलर्स आउटसाइड द बाउंड्रीज ऑफ यूएस. देखो कितना इंटरेस्टिंग टॉपिक है. अश्विनी जी ने भी वीडियो ऑन कर दी, थैंक यू जी. यानी कि डॉलर आउटसाइड द बाउंड्रीज ऑफ यूएस इज कॉल्ड एज यूरो डॉलर सिस्टम. अभी तक हम यही सोच रहे थे यूरो डॉलर, भाई यूरो और डॉलर दोनों क्रैश. ना, यूरो की तो बात ही नहीं कर रहे. इसमें यूरो की कहानी नहीं है. यूरो तो कहीं कहां कब का लूट चुका बेचारा. पाउंड तो बेचारा कई 100 साल हो गए लूटे हुए. अब तो डॉलर की कहानी है. और यूएस ने ऐसा इंश्योर किया कि वर्ल्ड को कभी भी एक्सपेंशन करनी पड़े तो उसकी जो फंडिंग करेंसी होगी डॉलर में होगी. उसको हम यूरो डॉलर सिस्टम बोलते हैं. इसको हम थोड़ा और समझ लेते हैं. इसमें 4 पॉइंट्स होगा. पहला पॉइंट, एवरी इकोनॉमी हैज टू ट्रेड, import and export. Trading requires billing. Billing has to happen in a currency which is acceptable to the world. And that currency emerged as dollar. So anywhere in the world, if you have to do exports or imports, the common currency of trade is dollar. So that is euro dollar system. Point number 1. Point number 2. Let us say any business has to expand. Tata's, Birlas, Ambani's, they have to expand businesses, expand territories. They want to acquire new territories, acquire new businesses outside India. They have to go outside India. They need again what? Dollars. Oh, point number 2. Businesses require dollars. Third, any economy who has got extra dollars, maybe because of your exports are more than imports,
So if you have got more dollars, so what do you do with dollars? The big daddy says, oh, you have got extra dollars, come back to me, baby. I am going to give you a piece of paper. This piece of paper is the world's safest piece of paper. Your money is lying safest with me because I am the king maker. My currency is backed by gold. No one else has got gold, and gold has ruled the world, not only for the last 25 years, 100 years, but maybe 5,000 years as well. So I am the big daddy of the world. So if you have got extra dollars, by chance, if you've got extra dollars, come back to me. Invest in me. That is known as investing in US treasuries. That is also Eurodollar system. So that means these three things is Eurodollar system. And the fourth thing is very, very interesting. In a way, US ने ऐसा इंश्योर कर दिया कि कभी अगर वर्ल्ड को सांस नहीं आता हो, तो सांस में सांस लाने के लिए सारा वर्ल्ड यूएस की तरफ देखेगा और कहेगा, भाई छाप, भाई डॉलर छाप. इट इज एज सिंपल एज दैट. अगर सिलिकॉन वैली बैंक को प्रॉब्लम आ रही है, तो उसको क्यों प्रॉब्लम आ रही है? क्योंकि प्रॉब्लम ऑफ मनी है ना, प्रॉब्लम ऑफ लिक्विडिटी है ना. तो सांस नहीं आ रहा, तो सांस कौन देगा, लिक्विडिटी कौन देगा? यूएस का सेंट्रल बैंक. तो यूएस कहेगा छापूं क्या? तो वर्ल्ड कहेगा प्लीज छाप भाई, क्योंकि अगर तू नहीं छापेगा तो मेरी इकोनॉमी में मेरा सेंसेक्स हिल रहा है, मेरा निफ्टी हिल रहा है, मेरा कोरिया का कॉस्पी हिल रहा है, मेरा हांगकांग का हैंगसेंग हिल रहा है, मेरा जापान का निक्की हिल रहा है. तू प्लीज छाप यार, प्लीज छाप और इसको सेटल कर यार. क्योंकि अगर तू नहीं छापेगा ना, तेरे सिलिकॉन वैली बैंक के चक्कर में मेरा बजाज फाइनेंस लूट जाएगा, मेरा एचडीएफसी बैंक का प्रॉब्लम हो जाएगा, मेरे आईसीआईसीआई बैंक में दिक्कतें शुरू हो जाएंगी. और अगर मेरे बैंकों में दिक्कतें शुरू हो गई, तो लोग भाई साहब लाइन लगा के बाहर खड़े हो जाए, क्योंकि उनको तो इतना ज्ञान आता ही नहीं है, उनको तो इतनी टर्मिनोलॉजी भी नहीं पता कि कौन सा यूरो डॉलर सिस्टम क्रैश हो रहा है. उनको लगेगा कुछ तो गड़बड़ है आईसीआईसीआई बैंक में, वो आईसीआईसीआई बैंक के बाहर एटीएम से भाई साहब मशीनों से पैसा निकालना शुरू कर देंगे. और अगर ऐसा हो गया, प्लीज यार तू छाप, प्लीज छाप. यानी कि यूएस ये कह रहा है कि बताओ जी, पोलो फ्रेंड करता हूं, पोल ओ फ्रेंड, हाँ जी छाप दो जी. तो सारा वर्ल्ड कह रहा है छाप दो जी. और यूएस कह रहा मगर अगर मैं छापूंगा तो छापने की जो प्रॉब्लम है, जो पीस ऑफ पेपर है, वो आप ही को खरीदना पड़ेगा, क्योंकि आपने कहा था छापो. तो वर्ल्ड कहता है भाई छाप, पीस ऑफ पेपर मेरे को दे, मैं तेरा पीस ऑफ पेपर खरीदने को तैयार हूं. और इतने सालों से यही तो यूएस कर रहा है. और चाइना ने $3 ट्रिलियन वर्थ ऑफ यूएस इन्वेस्टमेंट्स करके बैठा हुआ बेचारा, जिसमें से $1.5 ट्रिलियन यूएस की ट्रेजरी में और $1.5 ट्रिलियन यूएस के रियल एस्टेट में और इक्विटीज में. क्योंकि हर बार जब यूएस में प्रॉब्लम आती है, रियल एस्टेट में आती है, क्या कहता है, आ जाओ मेरे यहां पे आ जाओ. इक्विटीज में प्रॉब्लम आती है, आ जाओ. बॉन्ड में प्रॉब्लम आती है, आ जाओ. और ये सारी आ जाओ में क्रक्स क्या है, छापूं क्या? तो वर्ल्ड कहता है छाप दे. इंडिया के पास कितना है, $550 बिलियन. जापान के पास कितना है, $1 ट्रिलियन. सारे वर्ल्ड को बीमार कर रखा है. हाँ, सारे वर्ल्ड को बीमार कर. क्या मस्त गेम खेलिए भाई, बिग डैडी है अगला. अब यहां पे कहानी शुरू. आई होप आपको यूरो डॉलर सिस्टम क्या होता है समझ आ गया. यानी सारों को बीमार कर रखा है यूएस ने, और यूएस कहता है तुम्हारी बीमारी का इलाज मैं, और मेरे अंदर कोई भी प्रॉब्लम शुरू होगी तो तुम ही मेरे को चीख चीख के कहोगे कि प्लीज बीमारी का इलाज के लिए भाई छाप. और मैं कहूंगा आपको कि छापना बुरी बात है, इससे महंगाई बढ़ जाएगी, इससे प्रॉब्लम आ जाएगी. तो बाकी कंट्रीज क्या कहेंगे, भाई छाप, ज्ञान मत दे, छाप. आई होप यूरो डॉलर सिस्टम आपको समझ आ गया. अब हम बात कर रहे हैं यूरो डॉलर सिस्टम क्रैश होना क्यों दिख रहा है. और ये एक दिन में नहीं होगा. ऐसा नहीं बोलो मैं आज बताऊं आपको, सर कल आप मेरे को पकड़ के बोलो ट्विटर पे, सर आपने कहा था हुआ तो है. रात को थोड़ा ना हो जाएगा भाई साहब, सैटरडे आज वीकेंड है. एक रात को नहीं होएगा, एक हफ्ते में भी नहीं होएगा. मैं तो 4 साल से बोल रहा हूं, और धीरे धीरे करके कुछ कुछ दिक्कतें जो बढ़ रही हैं, शुरू हुई हैं, वो उसका एक भूमिका बन रही है. अब इसमें बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, यूरो डॉलर सिस्टम क्रैश होता क्यों दिख रहा है. तो पहले समझते हैं
यूरो डॉलर सिस्टम को पैदा करने वाला यूएस ने गेम क्या करी, यूएस ने सबसे पहले जब जापान उछलता उछलता आता था ना यूएस के पास कि भाई साहब मेरे पास डॉलर है, डॉलर पकड़ो, मेरे को गोल्ड दे दो, यूएस ने कहा इसका इलाज करना पड़ेगा। एक इलाज जापान का करना पड़ेगा और एक इलाज यूएसएसआर का करना पड़ेगा। यूएसएसआर का इलाज उसने आइडियोलॉजी से किया और उसको ब्रेक कर दिया, और जापान का इलाज चाइना से किया। तो उसने क्या किया, उसने एक शादी करी यूएस ने। उस शादी को मैं नाम देता हूं यूएस और चाइना की शादी, जिसको मैं बोलता हूं चिमेरिका, चाइना वेड्स अमेरिका, चिमेरिका। जब ऐसी शादी हुई और यूएसएसआर जब टूट गया, यूएसएसआर का दिल जब टूट गया, तो यूएसएसआर भी शादी करने के लिए गया, तो उसने शादी करी यूरोप के साथ। उस शादी को मैं बोलता हूं यूरशिया। तो रशिया ने क्या कहा यूरोप को कि देखो, यूएस है चाइना के साथ, मैं हूं तुम्हारे साथ, मेरे पास है नेचुरल गैस और ऑयल, और यूरोप के पास है फैक्ट्री। मैं तुम्हें ऑयल और नेचुरल गैस दूंगा, तुम फैक्ट्री में माल बनाओ और वर्ल्ड में बेचो। जिसके लिए उसने एक पूरी पाइपलाइन ही बिछा दी भाई साहब, यूएसएसआर से लेकर, रशिया से लेकर जर्मनी तक, नॉर्थ स्ट्रीम है ना, नॉर्थ स्ट्रीम, और एक और बिछाने लगा था। यानी मस्त शादी चल रही थी बेचारे, यानी कि यूरशिया मस्त शादी। मगर चाइना और यूएस की शादी में प्रॉब्लम आ रही थी, चिमेरिका। शादी का अरेंजमेंट क्या था, यूएस ने कहा था चाइना को कि जो भी मैं यूएस में बनाता हूं, आई वुड आउटसोर्स एवरीथिंग टू बी मैन्युफैक्चर्ड इन चाइना, प्रोवाइडेड वन थिंग, you have got a cheap labor. You ensure that you produce this product at the cheapest possibility manner. I will supply you the technology, I will supply you everything, boss, whatever you require. But you will supply the finished goods only to US, not to anywhere else. और मैं उसको आगे बेचूंगा महंगे पे, तू मेरे को बेचेगा सस्ते पे, तेरी इकोनॉमी भी खुश और मेरी इकोनॉमी तो बल्ले बल्ले। तो चाइना ने 1980 से लेकर 2008 तक यूएस की बात सुनी। मगर जब यूएस में ग्रेट फाइनेंशियल क्राइसिस आया, सब प्राइम क्राइसिस, कभी समय लगेगा तो उसके ऊपर भी बात करेंगे कि वो क्यों आया, क्योंकि कईयों को लगता है सब प्राइम क्राइसिस का मतलब प्रॉपर्टी का क्राइसिस, और नहीं जी नहीं। सब प्राइम क्राइसिस मतलब भाई साहब लोन का क्राइसिस, और नहीं जी नहीं। इसमें गेम ही बहुत बड़ी थी, डेरिवेटिव्स की गेम थी। उसी में तो पीएचडी करी है, उसी का मैं वन ऑफ द लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर बैंक का नेशनल हेड ऑफ ट्रेजरी डेरिवेटिव्स रहा, और उसी के ऊपर फिर किताब लिखी, करेंसी डेरिवेटिव्स बाय पियर्सन। आपको किताब नहीं खरीदनी, मैं किताब का प्रमोशन नहीं कर रहा, मैं आपको सिर्फ बताने की कोशिश कर रहा हूं कि जो असलियत पता लगी डेरिवेटिव्स में रह के, डिपार्टमेंट में रह के, तो समझ आया वर्ल्ड में गेम ही कुछ और हो रही है। और उस गेम में जो एक छोटा सा हिस्सा है, बिग शॉट भी छोटी सी चीज है, बिग शॉट तो मोर ऑफ इक्विटी मार्केट में क्या हुआ और फिर उसका यूएस ट्रेजरी में क्या फर्क पड़ा, फिर उसका सीडीओस बन गए, वो एक सेकेंडरी चीज है। फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन कुछ और है। मगर उसमें भी जब सब प्राइम क्राइसिस वर्ल्ड में बढ़ा, तो चाइना ने कहा ये तो गयो, यूएस तो गयो, तो अपने को इमर्ज होना है एज द नेक्स्ट यूएस। तो चाइना ने वहां से प्लानिंग कर ली थी, और चाइना का प्लानिंग ऐसा था कि धीरे धीरे करके चाइना का जो एक्सपोर्ट था वो यूएस की तरफ जो जाता था, चाइना ने बाकी वर्ल्ड में बेचना शुरू कर दिया। और यूएस में जो इंपोर्ट होता था चाइना से, वो महंगा होने लग गया। तो यूएस चाइना को कहने लगा, ओए हेलो, हमारी बात हुई थी, तू हमें सस्ते में सप्लाई करेगा। चाइना सुनता नहीं था उसका। फिर भाई साहब जब सुनता ही था, ओबामा ने बड़ी कोशिश करी, मगर ट्रंप तो भाई साहब तलवार निकाल के आ गए। ट्रंप साहब ने पूरी लड़ाई छेड़ दी, ट्रेड वॉर। एंड जब ऐसा हुआ, तो व्हेन यूएस रियलाइज दैट चाइना एंड अमेरिका's marriage is on a verge of a breakdown, he wanted the other marriage to also break off. So उसने क्या किया, नॉर्थ स्ट्रीम में आग लगा दी, क्रैश कर दिया। And that's how a new marriage has formed, which we call it as Chashia, China and Russia. अब देखो यहां पे गेम गलत कर गया बेचारा यूएस, उसने सोचा नहीं था। वो कहते हैं ना, सोचा न था, और दोनों भाई साहब बागी इकट्ठे हो गए। रशिया हैज गॉट एनर्जी, ऑयल एंड नेचुरल गैस,
and China has the factory. तो ये दोनों इकट्ठे मिल गए. Now, because of which, what is going to happen is, and what is really going to get developed in the last 1 year, you must have seen as well, most of these economies have stopped using dollar as the carrier currency. In fact, you would have also recently heard, India has been also trying to build up a billing in rupee. Yeah, ये जो billing in rupee है, आप हैरान होंगे, and I'm assuming कि आपको ये लगता है ये अभी शुरू किया. अरे नहीं, ये इंडिया ने शुरू किया था 2010 में. 2009-10 में इन्होंने शुरू किया. अब जाके क्यों न्यूज में आया? क्योंकि 9-10 से लेके अब तक कुछ हो ही नहीं पाया. बाय द वे, यहां पे मैं एक और क्लैरिफाई कर दूं, क्योंकि अभी जो आप न्यूज सुन रहे हैं वो ये देख रहे हैं 34 कंट्री से हमारा कोलैबोरेशन हो गया है, वो वॉस्ट्रो अकाउंट खुल गए, नॉस्ट्रो अकाउंट खुल गए. मगर एक दिक्कत है, अभी भी ट्रेडिंग नहीं शुरू हुई रुपी में. क्यों? अब देखो, ये वाली बात अब यहाँ पे करनी अच्छी बात नहीं है, बिकॉज आई एम एसोसिएटेड विद आरबीआई एंड सेबी एक्सेट्रा, तो आई एम ऑन टू विद देम एज एडवाइजरी एंड ट्रेनरशिप रोल, तो वो अच्छी बात नहीं है, तो इसलिए मैं वहां पे बात नहीं करता. बट फिलहाल के लिए डोंट गेट दैट एक्साइटेड कि हाँ इंडिया में तो भाई साहब 34 कंट्री से हमारा कोलैबोरेशन हो गया, रुपी ही रुपी नेक्स्ट डॉलर है. आजकल आर्टिकल्स भी आने शुरू हो जाएंगे, रुपी इज द नेक्स्ट डॉलर. अभी थांबा, अभी थोड़ा कुछ प्रॉब्लम आ रही है उसमें, वो हम बात करते हैं. बट this problem is good to have because now the world is moving away from the dollar system. The world is moving away from the euro dollar system. अब इसमें challenge क्या है? And then I'll conclude. Challenge ये है, now this time when US is facing a crisis on Silicon Valley Bank or maybe some other crisis, whatever looms on US next time, and when US says, hello boss, should I print dollars? The world is saying, no, we are not going to buy your US treasuries anymore. The world has already stopped buying US treasuries. The world has already started to do that. Russia has already been doing, China has already been doing, now India is also doing. If all the major countries of the world start buying other than US treasuries, it can be something else, I'm not coming onto that. It cannot be gold, but of course it has to be something else, but I'm not coming onto that. But if they've already started not to invest in the US treasuries, not to bill in dollars only, not to expand my businesses abroad in dollars funding, if this has already started, and now if the world is seeing that the crisis is coming in US, पहले क्या होता था? पहले US में क्राइसिस आता था, वर्ल्ड कहता था छाप. अब क्या हो रहा है? US में क्राइसिस शुरू हुआ है, सिलिकॉन वैली बैंक का, लास्ट ईयर क्रेडिट स्विस का, उससे पहले डॉइचे बैंक का. वर्ल्ड इज सेइंग डोंट छाप, नहीं खरीदेंगे हम तेरा. That means the dollars outside the territorial boundary of US, called as Eurodollar system, it's crashing. So कोई doubts है तो आप पूछ सकते हैं. Otherwise maybe you can get connected with me as well over YouTube, over Twitter, whatever. तो आपको शायद कुछ वहां से और कुछ updates मिलते रहेंगे. But I hopefully believe कि आप अब तक तैयार हो गए होंगे. अब वीडियो ऑन करने की जरूरत चाहे नहीं है, मगर कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं. Thank you very much. Dr. Sahab, am I audible? Yes, please. So, Dr. Sahab, my first question is that you have already explained that it was all on the totality of gold reserves any nation is having in relation to the publishing of notes. Then now, if we talk of you can say this euro system, euro dollar, if dollar is not going to be treated as that criteria which has been treated from the decades. So now whether our rupee will get appreciated. ये जो सवाल है इसको मैं प्रॉपरली आंसर इसलिए नहीं कर पाऊंगा, मैं आपको आंसर करने की कोशिश करता हूँ. रुपी इज अ पार्शियली कन्वर्टेबल करेंसी. एक्चुअली मोस्ट ऑफ द लोग हैं वो नहीं समझ पाते हैं, वो हमेशा सवाल ये पूछते हैं कि रुपी का क्या लगता है. दे ऑल्सो बिलीव दैट रुपी मूविंग फ्रॉम 60 to 85 मीन्स इंडियन इकोनॉमी इज नॉट डूइंग गुड. नो, नॉट एट ऑल. ये आपको पता नहीं गलत किसी ने क्या पढ़ाया है, मेरे को नहीं पता, बट दैट्स अ रॉन्ग नोशन ऑल टुगेदर, टोटली अ रॉन्ग नोशन.
रुपी इज अ पार्शियली कन्वर्टेबल करेंसी। ये जो आप सवाल पूछना चाहते हैं, दैट इज ट्रू फॉर फ्रीली फ्री फ्लोट करेंसी और अ फ्रीली कन्वर्टेबल करेंसी विच वी कॉल इट एज यूरो, डॉलर, पाउंड, येन, सिंगापुर डॉलर, कैनेडियन डॉलर, ऑस्ट्रेलियन डॉलर, न्यूजीलैंड डॉलर, स्विस फ्रैंक। बट रुपी के केस में हम ऐसा इसलिए नहीं कर सकते बिकॉज रुपी इज अ मैनेज्ड करेंसी, इट्स अ मैनेज्ड फ्लोट। एग्जांपल देता हूं, रिकॉर्डिंग बंद कीजिए, मैं आपको थोड़ा एग्जांपल देने की कोशिश करता हूं। Sir, again, I have a last question that you already touched that because of this euro-dollar crisis, we are going to have a lot of differences in investment. Especially, you said mutual fund सही है. So अब मैं एक question है normally एक मेरे पास 100 रुपया है. So now in future, how much investment I have to do in FD, mutual fund, or RD, or you can say share market? Please, sir, if you can help us. काश मेरे पास वो बंच ऑफ वीडियोस बना होता, क्योंकि आपने जो मेरे से सवाल पूछा वो मैंने कई वीडियोस यूट्यूब में डाल रखी हैं कि म्यूचुअल Done, फंड, तो आप थोड़ा सर्च कर लेना, व्हाई done. व्हाई म्यूचुअल फंड इज नॉट सही बाय अमन चुग, ऐसा करके आपको म्यूचुअल फंड से क्या कुछ मिल जाएगा। रेदर आप यूं थोड़ी वीडियोस देखना, थोड़ा R&D करेंगे, मिल जाएगा। मैं आपको क्रक्स बताता हूँ। वैसे Done, done. देखिए, आपको सबसे पहले तो ये समझना जरूरी है, हम सारे लोगों के दिमाग में एक चीज डाल रखी है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करो। लॉन्ग टर्म में पैसा नहीं बनता। एक्चुअली में हमें बताया गया है, क्यों बताया गया है। 1991 में सेंसेक्स वाज अराउंड 5000 पॉइंट्स, 1992 में, जुलाई 2009, जुलाई 1992 5000। जनवरी 2004 में इट वाज 6000। कितना बड़ा? 1000 पॉइंट्स। 1000 पॉइंट्स 5000 पॉइंट्स के ऊपर कितना बड़ा? 20%। 12 साल में 20%। एनुअली सेंसेक्स कितना बड़ा? 1.7%, 1.5%। उस जमाने में एफडी का रेट था 14%। कोई शरीफ आदमी जिसके पास समझ हो, 12-14% का एफडी का रेट, वो मार्केट में 1.5% लगाएगा, चाहे शेयर मार्केट में चाहे म्यूचुअल फंड के थ्रू? लॉजिकली नहीं, बराबर। मगर कई लोगों ने लगाया होगा पैसा उस टाइम पे। क्यों? क्योंकि कईयों ने कहेगा 10-20 हजार पे लगा के भूल जा। वो भूल गया, वो इतना भूल गया कि वो दुनिया से ही भूल गया। कई लोग तो दुनिया से छोड़ गए। उनके बच्चों को पता लगा, अबे यार मेरे बाप के पास ये शेयर थे जिसमें 10 शेयर थे जिसमें एक जिंदा है, वो इन्फोसिस बन गया। बाकी 9 का कोई ठिकाना नहीं है, उनके बारे में कोई बात नहीं करेगा। मगर एक जो इन्फोसिस बन गया, उसको पेपर पे क्या लिखे जाता है मीडिया में? वो कहते हैं 10,000% रिटर्न। इफ यू वुड हैव इन्वेस्टेड इन 1992 टिल टुडे 10,000% रिटर्न। ओ भैया, 2004 में हमने अपनी शेयर मार्केट को ओपन किया था एफआईआई के। क्यों किया था अभी मैं उस पर नहीं जा रहा, उस पर बहुत बड़ा बवाल था, बहुत बड़ी गेम थी। तो हमारा सेंसेक्स 6000 से 22,500 कितना बढ़ गया? 300%। ओए होए, घोड़े गधे सब बढ़ जाएंगे ना सर। मगर अब रियलिटी पे जाते हैं। 22,500 का सेंसेक्स में, बाय द वे सेंसेक्स इज द टॉप 30 कंपनीज, ऐसी निफ्टी ले लो चाहे। तो टॉप 30 कंपनी सेंसेक्स जो है 22,500 था इन 2008 जनवरी, जस्ट बिफोर कोविड क्राइसिस। 2020 जनवरी आवर सेंसेक्स वाज अप्रोक्सीमेटली 42,000। माइनस करते हैं 20,000, 20,000 डिवाइड बाय 22,500 मल्टीप्लाई बाय 100, यानी मोटा मोटा 98%। 98% कितने सालों में? 12 सालों में। 98 डिवाइड बाय 12 कितना बना? 8%। एवरेज एफडी का रेट 2008 से लेकर 2020 के बीच में कितना था? 8%। तो मैं इतना ब्लड प्रेशर ऊपर नीचे क्यों कर रहा हूं? मैंने ये नहीं कहा कि शेयर मार्केट में नहीं लगाना, मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं, लॉन्ग टर्म में पैसा नहीं बनता। फिर क्या हुआ? फिर वर्ल्ड में क्राइसिस आया, तो वर्ल्ड ने फिर छापे पैसे। फिर क्या हुआ? 2020 में जो 42,000 वो भाई साहब 70,000। इसका मतलब ये, आम आदमी को ये लगता है कि भाई मार्केट तो तेरा भाई चला रहा है। वो जो आम आदमी है ना, उसका पोर्टफोलियो में जो भी शेयर्स होंगे हमेशा लॉस में होंगे। उसके जो म्यूचुअल फंड होंगे वो हमेशा रिटर्न देंगे ही नहीं। ये तो थैंक गॉड बीच में 2021 आ गया, इसलिए म्यूचुअल फंड के रिटर्न कुछ दिखने लग गए। अदरवाइज म्यूचुअल फंड के कोई खास रिटर्न होते नहीं। ये बात अलग है, हमें आता नहीं देखना। क्यों नहीं आता? क्योंकि हमने कभी खुद के म्यूचुअल फंड का रिटर्न कभी देखा नहीं। वहां पे एक चीज आती है एब्सोल्यूट रिटर्न, वहां पे होता है होल्डिंग पे रिटर्न। कभी एनुलाइज निकाला है?
क्या आप बताओ, स्टार मार के दे रहा हो, लोएस्ट से लेके पीक का म्यूचुअल फंड का रिटर्न आपको दिखा रहा है, स्टार मार के देते हैं वो म्यूचुअल फंड वाले। और मोस्ट ऑफ द म्यूचुअल फंड जो हैं वो अपने बेंचमार्क इंडेक्स को बीट नहीं करते, जिसको बोलते हैं नेगेटिव अल्फा। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि हमें यूरो डॉलर सिस्टम क्रैशिंग के तहत अपना जो पोर्टफोलियो है ना, उसके ऊपर समझ लेनी जरूरी है। और अगर हम समझ नहीं लेंगे नायर साहब, तो हम सब लोग जो इतनी मेहनत से पैसा कमा रहे हैं ना, और वो मेहनत से कमाया हुआ पैसा हम किसको दे रहे हैं? किसी ब्रोकर को। उसका नाम चाहे बैंकर भी हो सकता है, ब्रोकर भी हो सकता है, एडवाइजर भी हो सकता है, फाइनेंशियल प्लानर भी हो सकता है, सुंदर सुंदर वर्ड्स कुछ भी हो सकते हैं। मगर वो भाई साहब को ज्यादा नहीं आता, मगर वो आपको ज्यादा बातें बताता है। हमें लगता है यार इसको मेरे से तो ज्यादा आता होगा। वो अपने इंसेंटिव, अपनी प्रमोशन, अपने व्हाट डू यू कॉल शॉर्टकट ऑफ नॉलेज, आपका पैसा लगा के भाई साहब फंसा देगा। वही बंदा जो एक बैंक में था वो दूसरे बैंक में पहुंच जाएगा, वही बंदा जो एक ब्रोकिंग हाउस में दूसरे ब्रोकिंग हाउस में पहुंच जाएगा। यही शिफ्टिंग ऑफ अरेंजमेंट चल रहा है। ऐसा नहीं चलना चाहिए, क्योंकि आने वाले समय में आपके पैसे ब्लॉक हो जाएंगे। पॉइंट नंबर वन। पॉइंट नंबर टू, हम अगर बिजनेसेस में हैं, जॉब्स में हैं या प्रोफेशन में हैं, हमें अपने बिजनेसेस और जॉब्स और प्रोफेशंस में चेंजेस आते दिखेंगे सर। क्योंकि ये जो यूरो डॉलर सिस्टम क्रैश कर रहा है, या क्रैशिंग जो इन लाइन है, जो अगले 5-10 सालों में होगा, उसके कारण कई बिजनेस मॉडल्स चेंज हो रहे हैं, कई मेथड्स ऑफ डूइंग बिजनेसेस चेंज हो रहे हैं। आपने सुना होगा ऑफ लेट चार्टर्ड अकाउंटेंट कहते हैं ऑडिट में फीस नहीं आ रही और टैक्सेशन ऑनलाइन हो रहा है, तो पता नहीं करें क्या। कॉस्ट अकाउंटेंट कहते हैं कॉस्ट अकाउंटेंसी के ऑडिट नहीं मिल रहे, और अगर मिलते हैं तो फीस नहीं मिलती। कंपनी सेक्रेटरी जो एक जमाने में लोग करते थे, आज के में सीएस को लीगल कंप्लायंस का काम नहीं मिल रहा। अगर फाइनेंशियल वर्ल्ड में प्रोफेशनल्स जिनके इंस्टीट्यूट्स पार्लियामेंट में इनेक्टेड हैं, अगर उनके साथ ये हो रहा है, तो कहीं ना कहीं क्वालिफिकेशन में भी चैलेंज है। इसीलिए मुझे लगता है कि ऐसी नॉलेज अंडरस्टैंडिंग जो कोर डेप्थ वाली है, वो सिंस लोगों के पास नहीं है, तो जॉब्स, बिजनेसेस, प्रोफेशंस, पर्सनल वेल्थ, हमारे बच्चों के करियर पाथ, हर एक में चैलेंज आ सकता है। Dr. Aman, thank you so much. Beautifully explained. I have two questions which I have. The first one is, if the euro dollar is crashing, is there something else which is coming up which you can see, because you have a very different perspective of things? And the number two is, uh, what is US doing now? Because what I have understood from everything that you explained is, US never sits idle. They are always thinking of what to do in the future. So what's happening now? So two questions, sir. I'll try to give a brief answer, sir, but maybe once you stay connected over whatever social media I have told you, तो आपको और इसके आंसर्स मिलते रहेंगे। बाय द वे, सर्च करना इवेंट एंड टाइम एनालिसिस बाय अमन चुग। तो ये जो सारी चीजें आज हो रही हैं, ये मैंने ऑलरेडी ऑन रिकॉर्ड्स आज से 1 साल पहले, 2 साल पहले बता रखी है। अब इसी में जो पहला सवाल का जो आपका आंसर है, या रादर मैं दोनों सवालों को आंसर को क्लब करने की कोशिश करता हूँ। Gold physically is lying with US. So if most of the countries have to go back to fix their currency with some other thing as against dollar, तो गोल्ड की तरफ इमीडिएटली करेंसीज मूव नहीं कर सकती, बिकॉज गोल्ड का फिजिकल मूवमेंट नहीं है, यूएस मूवमेंट दे नहीं रहा। एंड इसी में आप थोड़ा गूगल आउट करेंगे, मैं आपको थोड़ा सेंस दे रहा हूं। जब भी वर्ल्ड के सेंट्रल बैंक जब गोल्ड खरीदते हैं ना कुलदीप जी, तो यूएस क्या करता है, यूएस अपने बुलियन बैंक्स के थ्रू अपना थोड़ा सा गोल्ड बिकवाता है मार्केट में, ताकि जो गोल्ड सेंट्रल बैंक्स ने खरीदा है उनकी वैल्यू गिर जाए, जिसके कारण सेंट्रल बैंक्स की बैलेंस शीट में मार्क्ड टू मार्केट नेगेटिव आ जाए और सेंट्रल बैंक डर जाए। और यूएस फिर पब्लिश भी करता है रिपोर्ट कि इस सेंट्रल बैंक का मार्क टू मार्केट इतना नेगेटिव। इस सेंट्रल बैंक का मार्क टू मार्केट कहां पे पब्लिश करता है? www.bis.org, बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट। और वर्ल्ड के सेंट्रल बैंक डर जाते हैं और यूएस वहां पे नेगेटिव इमेज देता है। तो फिर सारे वर्ल्ड के सेंट्रल बैंक क्या करते हैं? डॉलर को दोबारा बेचते हैं और यूएस की ट्रेजरी दोबारा खरीदते हैं। ये गेम करता है यूएस, यानी कि यूएस आइडल नहीं बैठता, ये पिछले 10 साल से कर रहा है।
इसका मतलब ये कि अगर गोल्ड की तरफ नहीं जा सकते और अगर जाना भी जाए तो वो यूएस नहीं जाने देता। तो मेरे को लगता है द न्यू वर्ल्ड ऑर्डर विल बी सच दैट there will be three categories of economies. One will be commodity producers, one will be stuff producers, and one will be other than the commodity and the stuff producers. Commodity producer जैसे सऊदी या ऑस्ट्रेलिया है या रशिया है, ये इकोनॉमीज अपनी ही करेंसी को अपनी ही कमोडिटी के साथ शायद लिंक कर, क्योंकि अभी तक क्या हो रहा था, मेरा ऑयल मगर बिलिंग होती है डॉलर में, मेरा कॉपर, ऑस्ट्रेलिया का कॉपर बिलिंग होती है डॉलर में, मेरा आयरन बिलिंग होती है डॉलर में। यूएस के पास तो ना तो आयरन ना कॉपर, और ऑयल भी उसका जो है वो है वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट, जो कि वर्ल्ड को चाहिए नहीं। वर्ल्ड को जो चाहिए वो है ब्रेंट, और या यूरोप को जो चाहिए वो है यूरल जो रशिया का है। तो यूएस ऐसी चौधरी बना हुआ है, डब्ल्यूटीआई का तो कोई फायदा ही नहीं है। तो यानी कि ये पहला स्टेप होगा जहां पे कॉमोडिटी प्रोड्यूसर अपनी ही कॉमोडिटी से अपनी करेंसी को पेग कर ले। ये पहला स्टेप होगा। इट विल टेक सम टाइम, बट दिस इज व्हाट आई फोरसी। सेकंड स्टेप होगा जो कंट्रीज कमोडिटी स्टफ प्रोड्यूसर है, स्टफ प्रोड्यूसर जैसे इंडिया है, चाइना है, ये इन बास्केट ऑफ कमोडिटीज के साथ अपनी करेंसी को पैक करने की कोशिश कर, यानी जो जो रिक्वायरमेंट है, ऑयल है, कॉपर है, नेचुरल गैस है, आयरन है वगैरह, उस बास्केट के आप पैक कर लेंगे। एंड जो बाकी रिमेनिंग इकोनॉमीज है, जिन्होंने भाई साहब ना तो जिनके पास गॉड गिफ्टेड कमोडिटी है और ना मैन मेड टैलेंट है टू मैन्युफैक्चर, उनके लिए बहुत बड़ा क्योस है, यानी कि दे विल बी ओनली टेकर्स, मतलब वो बहुत ज्यादा परेशान रहेंगे। तो ये ग्लोबल ऑर्डर इमर्ज होने में समय लगेगा, एंड दिस इज व्हाट आई फोरसी अ डायरेक्शन कैन बी। बट ऑब्वियस बीच में इंडिया विल प्ले अ मैसिव मेजर रोल, एंड आई एम नॉट सेइंग कि रुपी की बिलिंग अभी शुरू नहीं हुई, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप जो न्यूज पढ़ रहे हैं वो अभी तो कोई फायदा नहीं हुआ। फायदा है, एटलीस्ट वी आर मूविंग द वर्ल्ड इनटू दैट थॉट प्रोसेस। इफ इट ऑल मूविंग द वर्ल्ड इनटू थॉट प्रोसेस को अब सिर्फ इंप्लीमेंट करना एक कंट्री के साथ, दैट कैन किक स्टार्ट द रिलेशनशिप, उस तरफ हम जा रहे हैं। इंडियन गवर्नमेंट इज ऑलरेडी, मैं ये ऑफिशियली भी कर देता हूं क्योंकि ये ऑफिशियल होने भी जा रहा है। इंडिया इज ट्राइंग टू लिस्ट इट्स बॉन्ड ऑन वर्ल्ड गवर्नमेंट बॉन्ड इंडेक्स, यानी कि अब इंडिया को अगर पैसे की जरूरत है तो इंडिया कह रहा है पैसे की जरूरत है, मैं ऐसा करता हूं अपना बॉन्ड इंटरनेशनल वर्ल्ड पे ले जाता हूं, मेरा इंटरनेशनल वर्ल्ड पे कई एनआरआई जो है वो खरीदना चाहते हैं। तो वर्ल्ड गवर्नमेंट बॉन्ड इंडेक्स में इंडियन गवर्नमेंट को पैसा मिलेगा through its own NRIs, and that will decide the course of action of the flow of money. Flow of money change हो जाएगा सर। Flow of money once it changes the रुख, चेंज हो गया रुख, तो फिर तो पूरा क्रैशिंग में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। एंड इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग मॉडल जो हम ट्रांसफॉर्मेशन में देखेंगे, बिकॉज मेरी और आपकी जनरेशन में हम ये रेयरेस्ट ऑफ द रेयर लोग हैं कि हम ये देखेंगे, विटनेस करेंगे और इसको जिएंगे। मतलब ऐसा वो कहते हैं ना, वो 17-18 सालों में, ये हर 50-100 सालों में ऐसा होता है। तो हम ऐसा इसको विटनेस करेंगे और वेरी ब्यूटीफुल जर्नी रहेगी। Very well explained, sir. Thank you so much. Thank you. Excuse me, sir. Good afternoon. Sir, adding on to this, so I just want to ask you that there is a concept or there is a term called SDR from the IMF. So isn't it can be the last resort in case it might get crash or something like that? So I just want to know the term of it. Like it's a special drawing rights, isn't it from the IMF? So if whether it get crash or not, isn't it can be the last resort per se? So I just want to 1945 में ब्रेटन वुड्स में जब बैठक हुई थी ना, यूएस ने जब सारों को बुलाया था, 44 कंट्रीज को बुलाया था, और आईएमएफ का और वर्ल्ड बैंक का लॉन्चिंग वही करी थी उसने। तो आईएमएफ किसका बेबी है? सिंपल, यानी कि आईएमएफ जब बेबी ही यूएस का है, तो यूएस ने ही फ्रांस को, जापान को, क्योंकि जापान एक तरह से प्रोटेक्शनिस्ट स्टेट है यूएस की, तो जापान को भी ले आया, फ्रांस को भी ले आया। जर्मनी भी प्रोटेक्शनिस्ट स्टेट थी, क्योंकि मिलिट्री वगैरह वो सब प्रोटेक्शन यूएस करता है, जर्मनी को भी ले आया। सारे कंट्रीज को वहां पे इकट्ठा कर लिया। चाइना ने अपने आप को लॉन्च करके चाइनीज युआन को वहां पे जरूर लॉन्च किया था एसडीआर में,
मगर चाइना ने एक और गेम खेली, मैं बोल देता हूँ, पता नहीं कितना कि मैं एक्सप्लेन कर पाऊंगा. सॉरी So there is also a currency called renminbi. वो चाइनीज ही है. जैसे हमारे पैसे और रुपये है, वैसे उसको युआन और रेमनी भी बोलते हैं. Okay. मगर चाइना ने क्या किया, जैसे हम क्लोन नहीं करते, क्लोन आदमी का क्लोन, तो चाइना ने अपनी करेंसी का क्लोन बना दिया, उसको नाम बोल दिया CNH, मतलब CNY, जो चाइना के अंदर है उसको एक और क्लोन दे दिया CNH, और CNH अवेलेबल कर दिया हांगकांग में, और वर्ल्ड को बोला कि अगर तुम्हें चाइना से सामान खरीदना है तो CNH खरीद के हमें पेमेंट कर दो. यानी कि आप इनडायरेक्टली अपनी करेंसी बेच के CNH खरीदो और CNH में मेरे को पेमेंट कर दो. माई CNH इज इक्वल टू CNY. तो यानी कि वर्ल्ड इज मूविंग टू अ वेरी वेरी थ्रेटनिंग ऑर्डर, और ये सारी चीजें यूरो डॉलर सिस्टम क्रैश का पार्ट. Great, sir. This is Dilbag here. It's been wonderful session, sir. Absolutely. You come to know that knowing the intrinsic value or knowing the balance sheet is not enough for investing also, right? So now I request. कभी वक्त होता तो उसके ऊपर बात करते हैं कि लोग बेचारे फंडामेंटल एनालिसिस और टेक्निकल एनालिसिस कर करके कैसे अपने पैसे उड़ा रहे हैं. Right, absolutely. Now I request Dr. Kuldeep Roje, he's our DN academic, to give the final thanks words for this wonderful session, sir. Thank you so much. Right. Thank you, Dilbag sir. Aman sir, I have heard a lot about you. I've listened to your videos and all these things, but listening to you directly and face to face, like virtually, I think it was a different experience altogether. People say that you explain things very well. I think I believe they are right. You have a very different style of sharing the things, and I could see the chat, the way the students were getting things, and even it was enlightening for all of us. You triggered different thought, and I think we were not normally thinking on those directions. We actually carried away by what comes in the media, and we also deeply thought that the subprime crisis was actually the property crisis. But I think you changed the dimension today, and we'll read it further. Very, very amazing style of sharing things, and you have deep knowledge, decorated person, so many achievements, not only academia, but also a real guru in the financial world. The way you explain the journey from gold backing to how it changed and how the printed currency and how US was having a big vision, and they realized what the world would need in somewhere in the future. And then, of course, how you took us through the 1933 depression and how Bretton Woods 1 and Bretton 2 changed the whole dimensions of the world. So you see again the story about Japan and Germany and how President Nixon in 1970 said no gold against dollar, and they were protecting their interest. And the 4 reasons you explained how the euro and dollar, they are related together. And of course, the latest in the concept, what's happening in this China aspect. And I think I was so amazed by some of the terminologies that you shared, the marriage, when you said there is a Chamarica and there is a Eurasia and there is a Chushia, which is coming up. I think these are the things which help us to understand things very, very deeply. Food for thought for all of us. And I think an inspiration from a person like you as to what is the new dimension, how we should prepare things. We would look forward to have a face-to-face conversation with you sometime whenever we visit the campus, sir. And on behalf of Chitkara Online, Chitkara University, on behalf of team and students, I really thank you from core of my heart for agreeing to come to this masterclass. And they say that spending an hour with a wise man changes the life. And I think this has happened with all of us today. Thank you so much once again, and looking forward for more such interactions. Over to you, Dilbag sir. Right. Thank you. Thanks all. Thanks, Aman sir. Thank you all. So we'll be concluding this masterclass now. Thanks a lot.